Hello students, I hope everyone is all right. Now we are going to do this A Thing of Beauty. So before that I want to tell you main points of A Thing of Beauty. So very first thing, A Thing of Beauty is joy forever. We know the very first line which says that a beautiful thing gives you always happiness. Now second, what is main point? This poem tells that its value never decreases, means the value of beauty of nature never decreases, will never be less. I think of beauty is shelter for us. And it also says that the poem also says that the beauty is the beauty, natural beauty, it gives us shelter for us. It creates a shade for us, for a sound sleep that is full of dreams, a good health, and our sadness, evil nature in healthy ways makes our life quite unpleasant. Means every time we are sad, our nature is actually evil and unhealthy, so that is why we are sad. But nature, this gives us, removes the pall of the sadness. Pall means hota hai, pall means cover, so it removes actually this sadness from our spirits. Now, trees provide a shady boon for sheep, as trees, means the nature does for us as trees, they do for sheep. Now, he gives many other examples as well of nature, and also he says gives a comparison. He gives a comparison that nature provides us an immortal drink that pours into our hearts right from heaven. Okay, so let's continue. A thing of beauty is joy forever. Okay, now I want to tell you, we are going to, now in this paragraph, in this video, we are going to cover uh, the whole explanation. Along with that, we will do these question answers which are given here. I want to tell you this, these question answers will do these. Okay, so we are going to this, and along with that, explanation, word meanings. So be ready with your notebooks and books, whatever you have, that is up to you. And always, whenever you read something, always take some pencil or something, so that important points you can jot it down in your notebook, right? So let's continue the poem. A thing of beauty is the joy forever, means it's a thing, a beautiful thing always gives you happiness, हमेशा आपको खुश करती है. Its loveliness never increases, never, its loveliness always increases, means it never less, it always increases, it will never decrease, but its beauty always increase. इट विल नेवर पास इंटू नथिंगनेस, मीन्स इट विल नेवर बी एंड, इसका कभी भी एंड नहीं होगा, अंत नहीं होगा. बट विल कीप अ बाउर क्वाइट फॉर अस, बट इट विल बी like a bower, means a shelter, a shadow for us, and it will provide us a sleep full of sweet dreams, means this shelter would provide us sweet dreams and health, and along with that it will provide us quiet breathing. Okay, provide a quiet breathing. So now, word meanings: forever, always. We know loveliness, its beauty pass into nothingness, means it will never turn into, there will be no value of that. Okay, nothingness means there will be never, it will never be turned into nothingness, means there will not be any value of nature, so it will never happen actually. Okay, quiet and bower means a pleasant place, or you can say shade under a tree. It is a kind of shade under a tree. So this nature provides us a shade under a tree for us. Okay, so now next, therefore on every morrow, morrow here means tomorrow, or you can say morning. Okay, so next day, so tomorrow we are reading means we are weaving. ओके, रेड मीन्स वीविंग, और गूथना कहते हो, बनाना कहते हो. सो दैट इज अ फ्लावरी वेंट टू बाइंड अस टू द अर्थ इन स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, मीन्स a flowery band which is binding us, connecting us to the earth. Or what is this flowery band? Flowery band is nature. So ये nature जो है, that is connecting us to the earth. In spite of despondence means nirasha, dejection. Okay,
So despondence of the inhuman is cruelty. Dearth means lackness, कमी. Of noble natures means अच्छे नेचर. तो हमारे अंदर क्या है? In spite of despondence means dejection, निराशा, disappointment. So इन सब के बावजूद और इनह्यूमन, हमारे अंदर इनह्यूमैनिटी है, मतलब हम वी आर क्रूअल. डर्थ मीन्स कमी है. ऑफ नोबल नेचर, अच्छे नेचर की कमी है. And of the gloomy days, and these days which are full of sadness, and of all the unhealthy means the way we are using, they are actually unhealthy. हम गलत तरीके यूज़ करते हैं to do our work. Over darkened ways means evil ways. तो हम अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? evil ways यूज़ करते हैं, गलत तरीके यूज़ करते हैं. Made for our searching, yes, in spite of all. So these things actually made for our searching. So when we are sad, when we are not, we don't want to, when we are not happy actually, and we are in trying to find out some peaceful place, अच्छा जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं. That time हम क्या करते हैं? ये सारी चीज़ों से खुद ही परेशान हो जाते हैं. वी क्रिएट एंड देन वी अवर सेल्फ, हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं. तो क्या करते हैं? हम सर्च करना शुरू करते हैं. इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन दीज ऑल थिंग्स, इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल. एंड दीज थिंग्स, सम शेप, जो शेप है ब्यूटी की, मीन्स दीज ट्रीज, दीज प्लांट्स and flowers, and different kinds of plants, they gives us that kind of happiness. तो जब हम खुश होते हैं तो what is actually happening, हमारे स्पिरिट से इसको रिमूव किया जा रहा है. अवे द पॉल मीन्स कवर ऑफ दोज बैड थिंग्स फ्रॉम, क्योंकि हम गलत करते हैं इसलिए हमारी स्पिरिट्स कैसी हैं? डार्क हैं. तो हमारे ऊपर से ये जो गलत तरीके का कवर है, ये ब्यूटी जो है हमें खुशी दे करके उसे को रिमूव करती है. ओके, नाउ सच द सन, जैसे कि सन करता है, मून करता है, ओल्ड ट्रीज करती है, यंग ट्रीज करती है. स्प्राउटिंग, अ शेडी बून, स्प्राउटिंग मीन्स प्रोवाइड करती है. अ शेडी बून, एक शेडी बून, एक अच्छा सा बून होती है. किसके लिए? फॉर अ सिंपल शीप. सो दी सिंपल सिंपल शीप के पास में कोई रहने के लिए घर नहीं होता है, कार नहीं होती, उनके लिए क्या है? उनके लिए एक शेड जो होती है वही बहुत बड़ी चीज़ होती है. तो उनके लिए बून होता है, एक ट्रीज़ के नीचे खड़े हो जाना, उनके लिए खाना वगैरह. So these things actually they are boon for them, for a simple sheep. So now ये जो sun है, ये moon है, trees है, ये सारी चीज़ें जो है उनके लिए एक बून की तरीके से हैं, एक वरदान के तरीके से हैं. उनके लिए एक ये जस्ट अ मिनट. ओके, सो ये उनके लिए एक बून के तरीके से, एक ब्लेसिंग के तरीके से हैं. और सेम जैसे कि ये सारी चीज़ें एक सिंपल शीप मीन्स ह्यूमैनिटी के लिए, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लेसिंग्स की तरह हैं. एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जैसे कि फ्लावर्स, जो डैफोडिल्स के ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज इन ग्रीन वर्ल्ड मीन्स दे आर ऑलवेज इन लीव्स, विद लीव्स एंड प्लांट्स. सो these things, daffodils flowers are always blooming among the green surroundings. Have you seen? तो they look very beautiful. कैसे दिखते हैं? बहुत अच्छे दिखते हैं, beautiful दिखते हैं. and clear rills that for themselves a cooling cover make. और जो clear rills है, rills here small streams. okay, so जैसे कि small streams with transparent water make a cooling shelter for thicket. means कि जैसे कि जो ये क्लियर रिल्स हैं, पानी के झरने हैं, ये क्या करती हैं? कूलिंग कवर बना लेती हैं पेड़ों का. किसके लिए? अगेंस्ट द हॉट सीज़न, गर्मियों के लिए वो अपने ऊपर कवर बना लेती हैं. किसका? प्लांट्स का. तो आपने देखा होगा कि जो ये झरने होते, जो ये क्लियर रिल्स होती हैं, जो ये छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, क्या करती हैं? आसपास उनके जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं वो उनको कवर कर लेते हैं पूरी. तो जो पोइट है वो क्या इमेजिन कर रहा है कि दे आर मेकिंग cover for themselves to save themselves in the hot season. Now the mid forest break. Now what he says that mid means बीच में. ठीक है. So जो the mid forest break rich with the sprinkling of fair musk rose bloom. So what he says that the mid forest के mid में जो break है means जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पर rich with the sprinkling of fair musk rose. fair musk means yellowish rose जो है वो bloom हो रहे हैं. so means musk rose
musk rose actually, they are blooming इन द थिकेट ऑफ फॉरेस्ट, जो घना फॉरेस्ट है उसमें ब्लूम हो रहे हैं, तो ये बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं उस टाइम पर. सो actually breaks are growing in middle of the forest, so they have been made more beautiful and grand by sprinkling of blooming musk roses. Because of these musk roses, the place is looking so beautiful, magnificent, and it surpasses grandeur of the domes. Now what he says that such too is the grandeur of the domes. जैसे कि grandeur means होता है मैग्निफिशेंसी. ओके, मतलब कोई बहुत शानदार चीज़ है ऑफ द डूम्स. तो जो आ, जो जो लोग हैं ना जिनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके बारे में आप अच्छी चीज़ें सुन करके खुश होते हो. वैसे ही जो फेयर मस्क रोजेज़ हैं ये हर जगह बिखरे हुए हैं. कहाँ पर? मस्क रोजेज़ जो है वो फॉरेस्ट में हर जगह बिखरे हैं, और वो बहुत इतने ब्यूटीफुल लगते हैं कि आप उनको देखते हो, मतलब उनको देख करके कैसा फ़ील करते हो, जैसे कि जो महान लोग हैं उनके बारे में सुन करके आप फ़ील करते हो. वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, और हम उनको इमेजिन करते हैं उन शक्तिशाली लोगों को. लाइक आप जो पावरफुल लोग हैं उनको मतलब उनको उनको उनकी उनकी चीज़ों को, उनकी ब्रेवरी की कहानियाँ आज भी कही जाती हैं. तो वो आपके अंदर क्या मोटिवेशन फुल कर देते, मतलब आप मोटिवेट होते हो उनकी कहानी को सुन के. तो वैसे ही ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से आप मोटिवेट होते हो उनको सुन करके, वैसे ही सेम ये सारी चीज़ें हैं, और ऐसे ही नेचर हमको प्रोवाइड करता है. नाउ all lovely tales that we have heard or read, so and endless. So what he says that these all beautiful lovely tales mean stories. So what he says that the beauty, these mighty dead means our forefathers. When we hear about them, और जब हम उनके बारे में सुनते हैं, the beauty excels any other we have heard or read in our lovely tales. So we think about their nature, their their bravery, and that time we enjoy it and we also motivate. So it actually, these things encourage us when we read about them, when we heard about them, about those lovely tales of our forefathers and ancestors. So all lovely tales, those which are said, which are about our ancient, our forefathers, our people, those who were very great persons, mighty persons, and their tales, what happens to their tales when we read them or when we heard about them, what happens? It provides us the motivation. Okay, कैसे motivation provide करता है? As an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heaven spring. So it provides us an endless fountain. It is like an endless means without ending. It is continuous fountain. So continuous fountain जैसे of immortal drink. तो जैसे immortal drink is what? It is like that lives forever and never dies, who takes this immortal drink. Okay, so immortal is Hindi, I would say कि अमृत होता है immortal drink. So ठीक है, तो what you feel when people are talking about those people, about their bravery, about their life, and when you listen about that time how you feel? जैसे कि immortal drink आपके ऊपर गिर रही है. कहाँ से? हेवेंस के ब्रिंक से. ब्रिंक मीन्स कॉर्नर से. और एंडलेस फाउंटेन की तरह, कंटिन्यूस फाउंटेन की तरह जैसे आपके ऊपर वो गिर रही है. तो आप जब उनकी कहानियाँ सुनते हो तब आप ऐसा फील करते हो जैसे कि कंटिन्यू आपके ऊपर कोई फाउंटेन चल रहा है, जिसमें से इमॉर्टल ड्रिंक मीन्स अमृत आपके ऊपर आ रहा है. कहाँ से? हेवन के किनारे किनारे से, हेवेंस ब्रिंक से. ओके, so you have to remember this thing, that actually this beauty, nature जो है वो क्या करती है? The beauty of nature sprouts from a heavenly fountain. It is coming down, it is coming to you, it is coming down from a heavenly fountain, and it is continuously coming to you. It pours into our hearts heavenly.
bliss of nature. It is like for you it is a bliss of nature which is like immortal nectar. एक immortal nectar की तरीके से होता है जो आपको joy provide करता है, happiness provide करता है, motivation provide करता है. ऐसे ही nature होता है जो हमें खुशी प्रोवाइड करती है, और नेचर कभी भी ख़त्म नहीं होता है. जो ब्यूटी होती है नेचर की, इट नेवर एवर एंड्स. नाउ विल कंटिन्यू टूवर्ड्स द क्वेश्चंस. आई होप कि आपको सारे वर्ड मीनिंग्स मैंने बता दिए हैं. इन केस फिर भी नहीं आए हैं तो यू कैन सेंड मी in this comment box, and then we'll do it. Okay, list of things beauty mentioned in the poem. So can you tell me list of things? There are so many actually. Every little or big thing of nature is a thing of beauty and source of pleasure. So what it says, the list of things of beauty mentioned in the poem पूछा है. So these things, कौन सी poem, कौन सी चीज़ें जो mention की गई हैं? Sun, moon, trees, old trees, young trees, and daffodil flowers. All these things are mentioned here for the beauty. So are small streams with clear water and blooming musk roses. तो ये जितनी भी चीज़ें थी, ये सारी वर्ड्स जो है यूज़ किए गए हैं टू शो द ब्यूटी. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज लिस्ट द थिंग दैट कॉजेज सफरिंग एंड पेन. यहाँ पर कौन सी चीज़ें इस पोम में बताई गई हैं जो कॉज करती हैं फॉर सफरिंग एंड पेन. So there are so many things that causes suffering and pain. So that is because that biggest source of suffering is our our over darkened ways, our our over darkened ways, our disappointments, the lack of noble qualities जो हमारे अंदर नहीं होती है, the lack of noble qualities, एंड आवर अनहेल्दी एंड ईविल वेज विच वी डू. हम बचपन से ये सारी करना चीज़ें शुरू कर सकते हैं, जिससे हमें क्या होता है, जब हम किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, डेफिनेटली कोई हमारे लिए करता है एंड द सेम थिंग हैपन्स. हमें उसको प्रॉब्लम दे रहे हैं तो ही इज़ इन ट्रबल, एंड बिकॉज ही इज़ गिविंग अस प्रॉब्लम, दैट इज़ वाई वी आर इन ट्रबल. तो हम एक दूसरे को ट्रबल दे रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज वी आर यूजिंग दोज अनहेल्दी एंड ईविल वेज. नाउ दे डिप्रेस अवर सो जो ये सारी चीज़ें ये हमें डिप्रेस कर देती हैं, और हमारे ऊपर कंटिन्यूसली क्या हो जाता है, सैडनेस ओवर लाइफ. तो हमारे ऊपर कंटिन्यूसली हम कवर हो जाते हैं. इट इज़ लाइक अ पॉल ऑफ सैडनेस. पॉल मीन्स होता है कवर होता है सैडनेस का, जो हमारी पूरी डार्क स्पिरिट्स के ऊपर हमें कवर कर लेता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द लाइन therefore we are raising a flowery band to bind us to the earth suggest to you? What it says actually, what it says, yes, it says that कि we connect to earth, we connect to the earth, our earth, by this nature. A flowery band is here nature. Okay, तो हम जो है जॉन कीट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, जॉन कीट्स इज़ एक्चुअली अ सेंसुअस पोइट. ही ये जो मतलब ये सेंसेस की सुनते हैं, सेंसेस मतलब जो हम फील करते हैं, ठीक है. सो हियर ही इज़ टॉकिंग अबाउट एंडलेस ब्यूटी. जो एंडलेस ब्यूटी है ना अर्थ की, तो ये इट लिंक्स अस टू द नेचर, टू द ब्यूटी, एंड विच इज़ अनब्रोकन. तोड़ा नहीं जा सकता. द थिंग ऑफ ब्यूटी आर लाइक कनेक्टिंग ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स. ये सारी चीज़ें हैं ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स. दीज थिंग्स आर एक्चुअली keep us attached to the earth actually. So this flowery band means these beautiful things like flowers, plants, this nature, it connects us to this earth. Because of that we are connected to the earth. Okay, now next question is what makes human being love life in spite of trouble and suffering. क्या चीज़ें हैं, क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी we are we want to live here? Because of nature, because of the beauty. This is the only thing. So here answer would be that there are so many things. In spite of all these things we want to live because because of some shape of beauty. You will write some shape of beauty brings love and happiness in spite of all these unpleasant things. A thing of beauty removes away the pall of sadness, sufferings, problems, everything. So it actually, this beauty of nature removes it, this pall, this cover. Okay, and it makes human being happy, joyful, love. Okay, so question number 5 is why is grandeur associated with the mighty dead? Those people who were very powerful, उनकी जो अच्छी ग्रैंड्योर मीन्स उनकी जो स्टोरीज होती थी विच वॉज लाइक
ओके, सो कैसे लिखोगे आप आंसर? द माइटी डेड वर द पीपल हु वर पावरफुल, माइटी डेड दोज हु वर पावरफुल एंड डोमिनेटिंग इन देयर ओन टाइम, अपने टाइम में दे वर डोमिनेटिंग एक्चुअली, एंड देयर अचीवमेंट्स मेड देम माइटी एंड ग्रेट, बिकॉज ऑफ देयर वर्क वी मिस देम, वी feel them. So that is their work actually dazzle our eyes, they shines our in our eyes. When we when we hear about them, we imagine that such mighty dead forefathers will attain more grandeur at the doomsday. They will be rewarded. So this is the answer. Now 6 and 7 answer. So what will you do we experience things of beauty only for short moments, or do they make lasting impression on us? And what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? इन दोनों के आंसर आप मुझे लिख के भेजो डेफिनेटली। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में यू विल राइट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू। और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें यूज़ की हुई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगी डेफिनेटली इसके फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर होगी, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोम एंड यू हैव टू रीड इट केयरफुली। कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं इसके साथ भेजूँगी, तो डेफिनेटली वर्क हार्ड फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट। एंड मेरे लिए कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे भेज सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच।